Hi, my name is Sanjay Swaraj and I'm an actor. I have come here to AKS Clinic from Mumbai. As you can see, for an actor, hair is a very important thing. Hair plays a very important part in actor's life, and I could sense that as we are aging, so the hair might be a problem, and I had some serious problem with my hair. So lots of friends of mine, they have come here to AKS Clinic, and Miss Dr. Akhilendra Singh and Dr. Khushbu Singh, they have treated them. So I called up Dr. Akhilendra, and उनकी बातों से मुझे ये महसूस हुआ कि he is perhaps the best, one of the best in this field. And वो पीछे अमेरिका भी होके आए थे, and he is with the latest technique. तो मैं यहाँ पे गुड़गांव में इनके AKS Clinic पे आया हूँ. Everything is so nice and so good so far. And let's see, I'm very confident and I don't doubt doctor's capability at all. So I think everything will be all right and सब कुछ अच्छा होगा. And मैं जब दोबारा से इसके अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो भी आपको बताऊंगा ताकि everybody could be benefited out of it. Thank you. The very first step of the hair transplant procedure is hairline designing. Before commencing the procedure, hairline was designed. This design proves the aesthetic sense of the doctor. Other than drawing the hairline, bald area was equally marked, which is to be covered during the hair transplant surgery. Yes, now I have drawn his hairline and can tell you that he has extensive hair loss in frontal, mid-scalp and the vertex zone. In order to cover the entire recipient area, we need say approx 6000 graft, which is practically not possible to harvest from the safe donor area in one session. So we are planning to do hair transplant for him around 3300 graft from the back of the head, FUE method, and tomorrow we will harvest around 1200 graft from the beard from the safe donor area, this area. In addition to this, we give PRP treatment to all patients after hair transplant, which will help him to recover fast and will give him a stronger and healthy growth of सर्जरी के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डॉक्टर साहब की नॉलेज है हम सबसे ज़्यादा. तो ये द वे ही वाज नरेटिंग, मुझे उससे ये सेंस लग गया था कि आई एम इनटू राइट हैंड्स. तो मैं ये एक्सपेक्ट करके तो आया था कि आई हैव टू गिव इट ए ट्राई एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे अच्छा काम चाहिए और मुझे अच्छा काम मिला है. बॉल्डनेस का एरिया बहुत बड़ा था, डोनर एरिया उसके सापेक्ष बहुत कम था, बट ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आएगा. दूसरी एक बात है, ही इज वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव पेशेंट. अभी तक मैंने लगभग जितनी भी हजारों सर्जरी किया उसमें बहुत से जो कोऑपरेटिव लोग थे उनमें से एक ये थे. दूसरा जैसे से बोलते थे वैसे पोजीशन कर लेते थे. पेन तो खैर होता नहीं ज्यादा लोगों को, बट इनको बिल्कुल भी नहीं हुआ शायद. जितना नॉर्मल पेशेंट में देते हैं, मे बी उसका हाफ एनेस्थीसिया की जरूरत हुई. और पोस्ट प्रोसीजर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है कि अवॉइड अल्कोहल फॉर 5 days एंड स्मोकिंग फॉर 2 weeks और 3 weeks. तो बीइंग एक्टर मुझे लग रहा था कि इस वाली चीज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल बड़ी सिंपल है. ही डोंट स्मोक, ही डोंट ड्रिंक, राइट. तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है एंड होपफुली 6 months to 8 months डाउन द लाइन ये एरिया आपका फुल हो जाएगा. सो फ्रॉम बिहाफ ऑफ AKS Clinic वी ऑल वेलकम संजय जी टू आवर फैमिली एंड विश हिम अ वेरी गुड